हेलो 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 हेलो। लेट्स कंटिन्यू। सो जब कहे थे 59 था, 49 था, अब 52 हो गया है। ये 3 सवाल मैंने ऑफ स्ट्रीम कर लिए, तो सब सीक्वेंस का हो गया। सब स्ट्रिंग्स नेक्स्ट पे चलते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्ट्रिंग्स। हाँ हाँ। ये सब बहुत बेकार बेकार सवाल है, पैलिंड्रोम वाले। स्टॉक्स तो आसान है, दे आर प्रीटी इजी। एंड ये तीन आई हैव नो क्लू ये है क्या, एल आई एस लॉन्गेस्ट इंग्रेडिएंट, आई हैव नो क्लू, मैंने करा ही नहीं। So this is really bad. This is pretty easy. Really bad. एंड 2 सवाल है, सो बुरे भी हुए तो एक दिन का काम है बस। उसके बाद बस ट्रीज करना बचा है, वो भी 2-3 दिन का काम है। तो अगर देखूँ इसमें 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 2 to 6, एंड देन 2 ले लो, ऐसे तो एक दिन का है। 7, 7 एंड देन 8, 8 10 दिन का काम है। ओके, लेट्स सी। दो स्ट्रिंग रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। ओके, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना। हम्म लेंथ बतानी है, ओके। फिर इनिशियली में जो हो जाता है, पहले मैं निकालता हूँ कि कुछ है लेंथ का आर सेम। ओके, दे आर नॉट द सेम। ओके, आई मीन दैट्स फाइन। तो जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर होगा, दैट हैज टू बी द मिनिमम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ द राइट, क्योंकि उससे बड़ा हो नहीं सकता। ओके, सो जो मेरा एन, जो मैक्स तक लाइक करेगा, दैट इज नथिंग बट लेन ऑफ, सॉरी, दैट्स मिनिमम ऑफ लेन ऑफ टेक्स्ट वन। ऐसा कर देते हैं, n1 is equal to len of text1, text1, n2 is equal to len of text2, minimum of n1 comma n2, right? ये मेरा n है। 1000। ओके, इट लुक्स टू बी ऑनेस्ट 2ddp लग रहा है। ओके, और अगर 2ddp हुआ तो कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं, टू गेट द फकिंग मिनिमम। ओके, लेट्स इमेजिन आई हैव अ 2ddp, राइट? dp of i comma j है मेरे पास, where I is the index of text1, j is the index of text2। यहाँ से यहाँ कहाँ तक है? सो ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? what the fuck do I need? Let's see। अगर इन दोनों का n1 n2 का, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, दैट मीन्स एक मैचिंग है। इफ दे आर मैचिंग, देन आई कैन से दिस इज नथिंग बट 1, क्योंकि ये तो खुद हो गई एंड इससे पहले के, राइट? आई थिंक सो। सो अगर ये दोनों मैचिंग है, लेट्स से, so we have two things, right? I and then I and j. If I is equal to j, मतलब जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर एट i is equal to character at j, so dp की वैल्यू should be 1 plus dp of I minus 1 and then j minus 1। I think so, यही होगा। बट व्हाट इफ मैचिंग सेम नहीं है? ओके, ओके, इफ दे आर नॉट द सेम, इफ दे आर नॉट द सेम, तो कहने से कि dp, if they are not the same, what options do I have?
या तो मैं 2D DP needs more n square वाला, तो quite possible. But let's say दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? The second option that I have is अगर ये मैच नहीं कर रहा तो कैन आई से डीपी ऑफ i-1j और डीपी ऑफ ij-1. Can I say these are the two options that I have? Would it be correct to say this? Would it be correct to say this? I am not sure. So what does this mean, right? एक it's something like dash 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 अपना ith index and then dash 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 jth index, right? So यहाँ से यहाँ तक कितना what is the longest, right? So if I know कि यहाँ से यहाँ तक क्या longest है, या तो वो होगा या फिर यहाँ से यहाँ तक क्या longest है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो फायदा है नहीं. आई थिंक दिस कुड बी अ रिलेशन. जिस रिलेशन पे हमको डीपी बिल्ड करनी है. मेरे को ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा है मेरे को कि वाई, मतलब कोई ऐसा केस जिसमें ये गलत हो. ऐसा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सबके लिए काम, बट आई कैन नॉट फाइंड सच अ केस जिसमें ये काम ना करे. मतलब एटलीस्ट दिमाग में नहीं आ रहा. सो हमको इस केस में वी डोंट नीड एन, वी डू नॉट इवन फकिंग नीड अ. तो क्या हम 1D डीपी, हमको क्या चाहिए, सिर्फ प्रीवियस वाला चाहिए. i-1 ऑफ जे, वो जो पहले है वही होगा. जे हमने बढ़ाया ही नहीं. या फिर जो इससे जस्ट पीछे जो भी बढ़ा है. लेकिन अगर हमको दोनों चाहिए, दैट इज द थिंग, राइट? अगर हमको दोनों चाहिए, if you need both, if you need both, ऊपर भी जाना है तो मैं बोलूँगा भाई तो सेम. लेकिन i-1 j-1 तो लॉस्ट हो चुका है. सो मेरे को एक 2 into n हो सकता है, नोट उसमें कर सकते हैं. सो dp is equal to list of longest subsequence, let's say 0 into n2 into length तक, right? Then can I say इनिशियली तो कुछ भी नहीं है, इनिशियली मेरे पे कुछ भी नहीं है. तो अब मेरा जबरदस्त मिनिमम वाला हमको रखना चाहिए ना. हाँ, do you think मिनिमम रखने से द थिंग इज राइट, ये दोनों सेम नहीं है. मतलब एक n1 तक है, एक n2 तक है. अच्छा, टाइम तो हाँ वो तब भी है, राइट? तो नाउ आई कैन से फॉर i in
range len of n1 कर लेते हैं, राइट। तो इसके लिए पहले एक न्यू डीपी बनाएगा which is gonna be nothing but dp. Then I can say for j in range n2. अब यहाँ पे we will start making up the db, right? So let's see if text1 of I is equal to text2 of j. बट एक और दिक्कत वाली बात है। Honestly, I think this might work. मेरे को थोड़ा लग रहा है कि maybe it might not work, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में 0 से 1 कैसे बनेगा जब ये एक सेम पे आ जाएगा। And honestly, it might work. If text1 I is equal to text2 of j, then I can say dp of क्या मैक्स लगाऊंगा, क्या मैक्स लगाया जाए। लेट्स से आया मेरा यहाँ से यहाँ तक था, राइट। एंड ये दोनों सेम इन कैरेक्टर्स है, तो राइट ये तो डेफिनेटली है आंसर में। बट कुड इट बी सेड कि मे बी तुम्हारा मैक्स आंसर ये नहीं है लेकिन ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक है। लेट्स ट्राई एक बार। dp of j is equal to 1 न्यू dp, सॉरी, न्यू dp of j is equal to 1 प्लस dp of पुराना वाला है ना, dp of I तो वही है जो है dp of j minus 1, राइट। dp of j minus 1 else we have another, again we have two options. New dp of j is equal to max of dp of, या तो सेम हो j एक ऊपर वाला, राइट, या फिर न्यू dp ऑफ j माइनस 1। लेकिन अब इसमें मेरे को देन तब मेरे को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा वरना तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने 1 से स्टार्ट करा दैट इज नॉट करेक्ट। j जब मेरा 0 है, सोर्स आई तक क्या कभी मिला है मेरे को? लेट्स से मैं j को अगर 0 1 से करूँ स्टार्ट, 1 से अगर मैं करता हूँ स्टार्ट, तो मेरे को 0,0 इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो कहना है इनिशलाइज दिस एज if text1 of 0 is equal to text2 of 0, then I can say dp of 0 में +1 plus equal to 1 कर दो, या वो 1 कर दो इक्वल टू प्लस equal to 1, क्या करना एक ही बात है। बट देन मैंने जब नई डीपी बनेगी वो वाला तो कभी हिलेगा ही नहीं और वो कभी हिल भी नहीं सकता। नहीं हिल तो सकता है, हिल तो सकता है, राइट, हिल तो सकता है। वो स्टार्टिंग में 0 होगा बट फिर वो 1 हो सकता है। So what we need to do is
इसको चलो रहने दो, and I can do this as new dp of j, right? इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, and then I can put a if condition. If j is greater than 0, then new dp of j is equal to max of जो भी पहले था new dp of j, comma dp of what? dp of j minus 1. लेकिन इसका क्या मतलब है, जो पहले था वही है, वो तो इनिशलाइज तो हमने डीपी से ही करा है, राइट? तो जो पहले था वो ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि अलग हो जाएगा. तो this statement is kind of useless. Why is it useless? मैं बोलता हूँ तुम्हारा आई तो यही है, तुमने एक नया जे कैरेक्टर करा लेकिन तो उसे मान ही नहीं रहा, तुम्हारा आंसर तो वही रहेगा ना, तो मान ही नहीं. सो आई कैन जस्ट मूव दिस, आई कैन पुट दिस एज elif, remove this thing, I can write this here, and ये dp of j नहीं होगा, this has to be new dp of j, right? क्योंकि what I need is current i का, not previous i का. what I need is current i का, current i का d new dp में stored है, right? And then at the end they can I return, अच्छा there is one more thing left to do. तो ये काम करने के बाद you can say dp is equal to new dp, and now I can just maybe return dp of n2 minus 1. Honestly looks like it is working. Fuck. Okay, so there is थोड़ा बहुत कुछ लगा है मैंने. सो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई तुमको ये करना है, बट मे बी इससे मेरे को मैथ्स आंसर ना मिल रहे, तो पहले क्या था भाई, यूडी का जे था, वो रहने दे. If I try this, okay, it is still wrong. आंसर पहले क्या आ रहा था, पहले भी 3 आ रहा था, एंड एक्सपेक्टेड वाज 2 ओनली. तो मैं जो 3 कहाँ से अपनी गांड से निकाल रहा हूँ. दिस, राइट? क्योंकि अब मेरे पास आई स्टिल हैव द ऑप्शन, भाई मेरे को सही लेना है. आई डोंट वांट टू टेक दिस आई, मैन. आई डू नॉट वांट टू टेक दिस आई. इफ आई डू नॉट वांट टू टेक दिस जे, वो तो सेम ही है. And then I can maybe put a new dp of j as well. And काम तो तब भी नहीं करेगा क्योंकि इंटरेस्टिंग.
ओके, सो या तो ये बग, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन गेट, चलो देखते हैं। let's see what the fact does it say। मैक्सिमम दो लेंथ की ही बन सकती है, हाँ। तो व्हाट इज द टू लेंथ मैक्सिमम? पी, पी के बाद वाई है, इट्स नॉट पी वाई। इज इट आर वाई आर पी? नोट, नॉट आर पी, क्यू, इज क्यू आर, ओके। लेकिन आई एम सेइंग कि नाविक तीन की बन सकती है, हाउ द फक आई एम सेइंग दैट? तीन की बन सकती है, हाँ। आई एम सेइंग कि तीन की बन रही है। आई हैव टू सी कि क्या अब इसमें इज गोना बी रियली अननोइंग टू डीबग। I don't even think I can debug. I is equal to I and then print or the print. Let me just put in a blank line. So I जब जीरो है, थोड़ा अच्छे से लगे। अबे यार इसकी ये बकचोदी। अगर so I जब जीरो है, can I make even one singular subsequence? I cannot. एकदम सही है। जब I O X है, can I make anything? I cannot. This is correct. O X C, can I make anything? I cannot make anything. O X C P, I is equal to 3 with it. Okay, it says you can. Okay. सो पी पे इसने देखा भाई, यहाँ से यहाँ तक वी डेफिनेटली कैन मेक, सो यहाँ से यहाँ तक यू कैन ऑल्सो मेक, सो ये भी सही है मेरे हिसाब से। अब लेट्स सी दूसरा कहाँ पे आता है, फिफ्थ पे। आई इज इक्वल 5, दैट मीन 0 1 2 3 4 5 पी आर, राइट। सो इसको प्रॉब्ली क्यू आर मिल गया होगा। सो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवेंथ पे उसको 2 मिल रहा है, सेवेंथ पे उसे 2 मिल रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 विच इज परफेक्ट, क्यू आर विच इज करेक्ट। अब आई इज इक्वल टू 6 पे, मतलब जस्ट अगला क्यू आर एस। उसका पहला ही 3 कैसे हो सकता है भाई? एस, ओके, सो वी फाउंड मैचिंग। ओके, सो दिस इज मैचिंग स्ट्रिंग, इस केस में आ गया। इस केस में आ गया हूँ। अच्छा, इस केस में आ गए एंड, अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। जे इसमें भी जे माइनस वन करे, बट इसमें जीरो की हमने कंडीशन नहीं लगाई, दैट इज द प्रॉब्लम। इफ जे इज
greater than 0 तो तुम ये कर लो, else new dp of j is just 1, राइट, क्योंकि पहला मैचिंग और j 0 है. लेट्स ट्राई अब. लवली, लव टू सी इट. लेट्स सी, रन करके देखते हैं. रन तो कर ही लिया था. लेट्स ट्राई टू सबमिट. यस सर, yes sir, I am too good man, I'm too fucking good. You listen man, I'm too fucking good. Fuck man, मेरा भांग भूजा हो गया. और प्रिंट कैसे करूँगा? प्रिंट ऑल what the fuck? No fucking way. पचास है सही. Okay. Fuck. So अगर मैंने लेंथ निकाल लिया, ing अगर मैं फंक्शन को पास करूँ और लेंथ पास करूँ, can it find? It's gonna be fucking annoying though. So what the fuck can I write away? Down, 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 down. Honestly मेरा तो रूट फोर्स लगाने का मन कर रहा है.
Hmm. Nook, nook, nook. Restore a list of all the indexes. वो एक ही बनाएगा ना. ये तो सारे चाहिए. ये क्या जितने भी. I fucking want to print them. This is a really, really shitty question. Follow up. Right, so what can I say? Can I fucking say? Fuck. Can I say? Can I goddamn fucking say? अगर मैं लेंथ ही निकालूं, राइट, आई वांट टू से ओके हे मैन लिसन. इतनी लेंथ की लॉन्गेस्ट है, मैंने तुमको ये बता दिया. तो फिर क्या? देन कैन आई और कैन आई नॉट? कैन आई कैन टेक these strings and find all the. यहाँ से यहाँ तक कौन कोई है कौन स्टार्ट किया?
नो, पैसे तो नहीं चलेगा। 2 रेस्ट पावर आंसर होगा वो, अगर मेरे को करना है। ओके, आई हैव नो क्लू क्या करना है इसमें। What did we learn about learn over there? We will be given couple of strings, and we did learn how to print the length of the longest common subsequence. Like the length over here is 3, so we did learn how to print the length of the longest common subsequence, and we got it as 3. Now what if I change the question? Like the question might ask you, okay, it's fine, you're giving me the length. What if I want the string? Yes, what if I want the string? Like over here, the longest common subsequence is nothing but, if I carefully see, I will have a B, I will have a B, I will have a D, I'll have a D, I'll have a E. So I can say the string is BDE. This is the LCS. What if someone comes up and says, hey, can you please print me the LCS? Can you do this? You can do it via brute force, but can you do it in an optimized way? Yep. I think we can. So in order to do this, what I will do is I'll go back to the summation that we did. So if you remember well enough, we did a summation, no, not this one, the tabulation summation. Let's copy paste the tabulation summation. So this was the summation that we did, okay? एक सेकेंड सलाहित, अच्छा ओके ओके ओके, इट्स 2D, 2D DP स्पेस ऑप्टिमाइज नहीं करा, दैट्स फाइन। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को एक काम करना दो, बस 1 मिनट टाइम। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Now let's take let's take the example A B C D E and B D G E K, okay? And let's do one thing. Let's simply print the DP array, okay? It's Okay. 0, j lesser than equal to m, and j plus plus. It can be like C out of DP of I, j, okay? And this is something we can go as C out of NL. Perfect. So let's quickly print the DP array, and let's see what is the DP array coming across. So this is what the DP array looks like, and this is the answer 3. So let's write this in our iPad, and then I'll be explaining you. Okay, so this is how the DP array looks like. We did print it, and we know this is the I, like this. These are the row numbers, and the column numbers go over here. And if you remember, while doing the tabulation, we converted this into a one-based indexing. You must be remembering. That's why if I write down the indexes, this is the 0th index, first index, second index, third index, fourth index, fifth index. This is a 0, this is the first, this is the second, this is the third, this is the fourth, this is the fifth. And if we take the string S1 equal to A, B, C, D, E, and S2 equal to B, D, G, E, K. So this is a string of length 5, but if I write down the indexes 0, 1, 2, 3, 4, but the answer is stored over here. Like if you carefully see, the answer is stored over here in a 5 and a 5.
Okay, so basically I can say A, B, C, D, E. This is the ith guy. And then you can say B, D, like, or you can just write it over here B, D, G, E, K, because you're doing one based indexing. So this is why only this portion of the DP matters, and these guys do not have any value. Okay, so what does this 3 signify? Where is this stored? At 5 and 5. Let's write the meaning of DP of 5 and 5. What is the string? A, B, C, D, E. B, D, B, D, G, E, K. A length 5 means entire string. Means entire string. A, B, C, D, E. A length 5 means entire string. So B, D, G, E, K. In both the strings, what's the longest length? 3. That is what is stored here. Okay, so in order to understand this, let's take this 2. Where is this stored? Stored at the index 4 and stored at the index 2. So at 4 and 2, this is stored. So let's write dp of 4, 2. So it's saying take a length of 4 string. That means A, B, C, D. A, B, C, D. Take a length 2 string, which means BD. Let's say BD. So in this, what is the length of the LCS? That's 2. If you carefully observe, we have a B, we have a D, and we have DD. The length of the longest common subsequence is 2. Thereby, the DP array stores a 2 over here. Similarly, if I say, why is the 1 stored over here? Because in this BD, why is the 1 stored over here? Because in this BDGE and in this ABC, there is only one thing common, that's B. Thereby, 1 is stored over here. That's the meaning of DPs. Okay, so how do you compute the answer? That's a big question. So if I ask you, how is the tabulation looking? So if I ask you, what are the formulas that you wrote? You wrote a simple formula, dp of ij is equal to 1 plus dp of I minus 1 and j minus 1. So this did happen when these guys were equal. Like s of I minus 1 was equal to like s of 2, j minus 1. This is when you wrote this. Remember, this is the first condition that you wrote. Or else what did you write? Or else you wrote very simple condition, dp of ij was max of dp of I minus 1j, that is previous row, same column, and dp of I comma j minus 1, same row, previous column. This is what you wrote. Either the upper one or the down. Either this one or either this one is what you wrote. So if I ask you a very, very straightforward question. Over here we have a 3, right? And we have a E and we have a K. Do the match. I say no. So basically when the tabulation will go across, like I'll show you in the code, basically what happens is there's an I and there's a J. So they will be running. So whenever they will be at the stage, from where does this 3 come? Whenever you're at this portion and you're trying to fill up dp of 5 and 5, dp of 5 and 5, and you're trying to fill this up, does K and E match? No. K and E do not match. So if they do not match, where does this 3 come in from? This line. Either the maximum of the previous row column or the previous guy. So basically, either the maximum of previous row, this is I comma j minus, this is I minus 1 comma j, and this is I comma j minus 1. Either of these guys maximum comes and gets stored over here. Thereby, this 3 did come from here 3. So what you'll do is you'll say, okay, fine. We came from here, so you will go over here. You will straightforward go over there, right? You start from this last guy, which is n cross m, and then you start moving the pointer. So right over here, you're here. Okay, now this is an E, this is an E, which means they are a match. They are a match. And if they are a match, where will this 3 come in from? Where will this 3 come in from? This 3 will come from 1 plus something on I minus 1 and j minus 1. What is I minus 1 and j minus 1? That's nothing but this guy. I minus 1 and j minus 1 is nothing but this guy. So basically what you did was, you took the value from here, you added a plus 1, and you wrote it over here. So now what will happen is, you will go over here. But remember this, before going over here, since this E matches to your E, you just store that as an answer. You store that as an answer. So you know that the length was 3 of the LCS. So remember, create an array or a string of length 3 and store E in the last index. Perfect. Now you're at 2. Does this D and does this G match? The answer to that is no. They do not match. So again, where will this 2 come from? The max of this or the max of this. So you go to the max. Perfect. Remember, whenever you go to the max, there is no need of taking any string. Perfect. Here's a D. Here's a D. Here's a D. They match. So if they match, where will this 2 come in from? This 1 plus 2. Perfect. Take this 1. So this came in from here. So before moving to this 1, a D is common. You just fill that D in. Perfect. Now you're at 1. Does this C and does this B match? No. So if they do not match, where will this 1 come from? Either the max of this or either the max of this. So what you do is you go to the max. So just go to the max. Perfect. Now, you're at here. This B and this B matches. If this B and this B matches, what can I say? They are matching. Thereby I can take this. And if they're matching, where will this 1 come from? From the diagonal, because it's I minus 1. Thereby you will go here. Remember this. This was the string BDGEK. You exhausted
The J is now anything. Remember, if the string gets exhausted, either of this string or either of this string, you will stop. If the string gets exhausted at any moment, you're right away going to stop without traveling. So what did you see? You moved, and whenever there was a diagonal movement, you took the strings and you put that into the length 3 string that you were looking for, right? So can I say, in order to write the code, it's going to be super simple and super straightforward. I know one thing for sure. I will initially have my pointers at n and j equal to m. That's for sure, because initially we will be starting over here, and then we will decide whether we move to the max or whether we move to the diagonal, right? So I know one thing. I will keep on doing till it gets exhausted. First string, we will okay, to think on this. What max of the real will come from here? If there is a 3 over here and there's a 3 over here, then you can move here or you can move here. It's okay. That means it might have multiple answers, and you cannot print multiple answers using a DP table. Then you have to apply normal brute force. So if there is a अच्छा 3, both of the places, you can move anywhere. So you'll be like, okay, I know one thing for sure. It either dp of I तो minus 1 हमको j, ब्रूट that's the फोर्स previous लगाना row, पड़ेगा. would be greater than the previous column, or it will be the other way. Because I know one thing for sure, this guy is either greater than this, or this guy is either greater than this. Like anyone will be greater because I take max of both. And whoever is the max, like over here 3 was the max, so I move. So how's this movement? If this guy is greater, I move towards him. If this guy is greater, I move towards him. So let's see. I'm ओके समझ गया मैं. लेकिन ये एक के लिए है राइट. उसने बोला कि सबके लिए यू हैव टू अप्लाई ब्रूट फोर्स देन. सो इसमें 50 है राइट. 2 रेशियो और 50 तो नहीं होने वाला. इट्स टू लॉन्ग. इट्स अ बिट टू फकिंग लॉन्ग. एडिटोरियल क्या बोलता है. अब बैक ट्रैकिंग करने को ही बोल रहा है ना. मैक्स 55. इट्स अ वेरी शिट क्वेश्चन. मैं नहीं कर रहा इसे. बेकार सा नहीं. मतलब एक का बढ़िया था. आई एम सॉरी टू से आई एम नॉट डूइंग दैट शिट एस क्वेश्चन. उसे बेकार सा नहीं देखा मैंने. इसलिए हाइट गीक्स होगी भाई. कुछ भी सवाल बनाते, कुछ भी भांग बोल रहा करते, या अपनी गांड में उंगली करते रहते. अच्छा स्ट्रिंग ढूंढनी है राइट इंस्टेड ऑफ. ओके. मुझे भी कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं. ऐसा नॉट रियली. क्योंकि ऐसा कुछ शेल लीड कोड था. नहीं. ओके. सब इसमें भी if I do make a 2D DP,
So if I make a dp of I and j, then we same conditions होते if they match, if I and j match, if they match, what does this mean? This means that dp I equal to j साइनों की एक वो लेंथ तो है। अब उससे पहले कितने लेंथ किया दैट आई नीड टू फाइंड। कैन दिस बी डन थ्रू स्लाइडिंग विंडो आल्सो? नहीं, है ना? सो अगर ऐसा है नहीं, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि अगर मैं स्लाइडिंग विंडो लगाऊंगा आई नीड एक एन की लूप टू गेट द कितने लेंथ की विंडो होगी वो मैं बाइनरी सर्च से लॉग इन भी कर सकता हूँ। दैट्स फाइन। एक एन मेरे को चाहिए होगा टू गेट द विंडो ऑफ S1। एक और एन मेरे को चाहिए होगा टू गेट द विंडो ऑफ S2, राइट? एंड एक और एन चाहिए टू एक्चुअली कंपेयर दिस टू बोथ विंडोज। So this is in cube login. n square login तो चलता है बट नॉट n cube login नहीं चलेगा। मैं इसमें 3D भी सोच रहा था अगर मैं लेंस के साथ भी कुछ अगर कर पाता, बट द constraints does not allow for cubic. ओके, मेरे को एक आइडिया है। अगर तो सबसे पहले आई कॉमा जे है, राइट?
कहीं पे भी लिंक ब्रेक हो जाए सो ओके सो इसको भी आई थिंक वी कैन डू स्पेस आउट माय रिजल्ट. If I just store my result as float of minus infinity vehicle, then I say n1 is equal to len of s1 and 2 is equal to len of s2. Then I can say ये तो आई एम श्योर मैंने कर रखा और बहुत ही ओके नहीं कर रखा होली फक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग करा है क्या गॉड नोस राइट इफ आई देन मेक अ डीपी फॉर क्या साइज अभी तुम्हारा बेटा डीपी ऑफ दैट्स गोना बी इनटू राइट अब मैं बोलता हूँ अब मैं क्या बोलता हूँ कि बेटा राइन रेंज एन वन एक अगर मैं न्यू डीपी भी बनाऊँ और जेन रेंज इन टू अगर ओके ओके आई हैव आइडिया आई हैव एन आइडिया if s1 of I is equal to s2 of j मैचिंग है ना भैया मैचिंग है ना अगर j ग्रेटर देन जीरो है तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना जो मेरा न्यू डीपी ऑफ j है दैट्स गोना बी 1 प्लस अब इसका ये मतलब नहीं कि वहां तक इसका मतलब है कि जो सबस्ट्रिंग मैं बना रहा हूँ वो आई एन जे पे एंड होगी ही होगी ये ज़रूरी है ठीक है तो एक तो ये आ गया और अगर उससे पिछले तक कितना बड़ा बना सकते थे वो जानना है मेरे को व्हाट्स दैट गोइंग बी डीपी ऑफ आई माइनस वन है तो डीपी होगा डीपी ऑफ जे माइनस वन राइट एल्स न्यू डीपी ऑफ जे इज इक्वल टू व्हाट ठीक है एंड देन अब तुम्हारा आंसर कुछ बड़ा है सो आई कैन स्टोर इट एज जो भी है तुम्हारा आंसर न्यू डीपी ऑफ जे राइट एल्स नहीं बना तुम्हारा सेम नहीं था डज दिस मीन कि रीसेट अगर सेम है ही नहीं न्यू डीपी ऑफ जे कैन आई से इट इज अ जीरो है इट इज जीरो एंड देन कैन आई से dp is equal to new dp एंड देन ये सारा करने के बाद कैन आई जस्ट रिटर्न रिजल्ट looks like it is working fuck माइनस इन्फिनिटी तो मतलब कभी मैच हुआ ही नहीं सो आई कैन जस्ट रिटर्न मैक्स ऑफ जीरो कॉमा रिजल्ट इन या फिर इंस्टेड ऑफ वाई पुट उसको रखूँ भी क्यों मैं माइनस इन्फिनिटी इसको मैं जस्ट जीरो कर लूँ एंड वो वाला केस अब चल जाना चाहिए yes sir I am the fucking goat man I am the fucking goat 3 सवाल और डाल दो अपने कोटे में I am the fucking goat man I am the fucking goat longest palindromic subsequence lengthiness okay
Answer is only one second. हजार तक है. But it is a subsequence, right? I mean, it's definitely easier when I know कि DP लगेगी. Okay. ठीक है. Longest palindromic subsequence. So, fuck. I have an idea. I have a very, very, very lovely idea. ये तो सीधे इसमें तो डीपी की जरूरत भी नहीं है. मैं Can I not just consider each element as the center and then expand from the middle? Can I not just do that? Can I not do something like for middle in पहले result कर लेते हैं 0 which is at least 1 तो होता है हो गई unless it is an empty string जो कि नहीं हो सकता. For middle in भी लिख देते हैं. N is equal to len of s. Can I say for middle in range n, right? I is equal to j is equal to middle while I is greater than equal to 0 and j is less than n. क्या करो? If s of I is equal to s of j, result is equal to मतलब ये valid है. Result is equal to max of I minus j plus 1, right? Result of this and then जो पहले था ये अपना max है, right? And then we can say I minus equal to 1 and j plus is equal to 1. Can we expand more? Else, if you can't expand more, just break and then we can just return result अब. इसमें dp क्यों लगनी थी? Fuck. Len. Holy fuck, and I fucked up somehow.
अच्छा subsequence है this will work for substring and subarrays. Substrings के लिए काम करेगा. It won't work for subsequence. Okay. Okay, this makes more sense. तो मैं सोच जो इसके लिए डीपी तो नहीं लग रही. Okay, but still I think we can keep expand from the middle is supposed to कुछ. If I am able to do something from this, interesting. अगर मैं i comma j का एक वो बनाऊँ, I is the starting index, j is the end index. If I make something like this, I I don't fucking know. Right? अगर I and j are the same, the start and end are the same, तो उनके बीच में जो भी सबसे बड़ा हो सकता है वो रखो. But that is the thing, right? I do not know सबसे starting में क्या होगा. Unless I start I from the reverse. Then I definitely know that. अगर मैं वो करता हूँ, then what about j? Then what about fucking j? Then j will start from उससे वहाँ तक. Okay, let's try something like this. So I can maybe say dp. I mean मेरा पिछला वाला substring के लिए भी गलत था. Because bvb mean length की substring है तो ये. How the fuck is it saying 1? This is more important to debug. Wait a minute. तो मेरा जो मिडिल ये बनेगा 0 1. ये ब्रेक करने से फॉर लूप को तो ब्रेक नहीं कर रहा. आई डोंट इट शुड नॉट. It definitely should not do this. Uh, oh fuck, I minus j नहीं होगा, j minus I plus 1 होगा. j minus I plus 1, my fucking bad. ये अब ये 3 दे रहा है. एंड इसमें fuck. अच्छा that is only gonna work with even उसका है ना. So एक में middle is gonna be single element, right? What was the second case? This is for odd, right? This is for odd. What about even? In even. I is equal, let I be the middle part, and let j be the middle plus 1, right? Then I can say while this shit, if they are both equal, right? Then it's a valid. Then I think I can just repeat. Fuck. I think I can just repeat this. If they are equal, they are valid. Try to expand. Otherwise, they are not. And we can just break. Okay, दो इसमें आ रहा है. That's good. But this is not our question.
सो अपना है, लेट्स मेक डी पे 0 इंटू 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 n is equal to len of s, and how many times for dash in the range, and right, ये अपनी dp है. If I say, hey man, कितनी लेंथ की बना सकते हो starting from this ending at this, I'm gonna be like, okay, सबसे पहले तो ये करने के लिए I need to go in reverse order I के लिए. For I in the range n -1 से लेके -1 से -1, this is my I, right? Okay. Now for j in the range, I need to go in right. So what do I need here अब? So j तो I के आगे ही रहेगा, I comma n तक, right? Something like this. Hmm. Okay. So what do I need now? I need I need okay. If अगर स्टार्ट एंड बराबर है तभी पैरेंटोम हो सकता है ना. If dp of I, not I, if s of I is equal to s of j, अगर कुछ ऐसा है तो dp of I and j is nothing but 2 plus dp of I plus 1 j minus 1. Else वरना क्या होगा भाई? वरना dp of I and j सेम नहीं है, सेम नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बड़ी बात है भाई. equal to max of dp of I plus 1 of j, यही कह सकता हूँ मैं. अगर अगर I and j आर नॉट सेम, कोई बात नहीं, सेम नहीं है तो क्या हो सकता है?
यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, राइट। और डी पी ऑफ आई से लेके j-1 तक। आई प्लस वन हमेशा मेरा रेडी होगा सारा पूरा का पूरा, तो वी कैन गेट आई द जे ऑफ आई प्लस वन, राइट। एंड सेम आई में हमारा जे तो सीधे जा रहा है, सो वी कैन गेट j-1 ऑल्सो। एंड नाउ आई कैन जस्ट रिटर्न डी पी ऑफ 0 से n-1. I fucked up something. ओके, आई कभी तो कभी ना कभी तो आई लास्ट इंडेक्स भी होगा, और जे ज़ीरो भी हो सकता है। सो इफ आई इज लेस देन एन एंड जे इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तब तो ये कर लो। तब तो ये कर लूँ, वरना इसका क्या मतलब है? या फिर या तो मेरा आई लास्ट है, अगर मेरा आई लास्ट है तो जे तो उसके आगे होगा, वन ही हो सकता है। या फिर मेरा जे ज़ीरो है, दोनों केस में मेरा आंसर बन गया, वन है भाई। अब इसमें देखते हैं, अगर वो मैचिंग ही नहीं है, अगर मेरा अगर मेरा स्टार्ट ही लास्ट है, ऐसा वो तो होगा नहीं इसमें। आई जब मेरा लास्ट हो गया, लेट वन थिंग, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। आई कैन डू समथिंग लाइक, इफ आई इज लेस देन एन, सॉरी ये नहीं, या तो इफ आई इज इक्वल टू n-1 और जे इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? आई तुम्हारा क्या है? लास्ट इंडेक्स है, तो तुम्हारा डीपी तो हमेशा वन ही होगा। आई लास्ट है तो जे भी लास्ट होगा, जे ज़ीरो है तो आई भी ज़ीरो होगा, एंड देन वी कैन कंटिन्यू आउट। मतलब यहाँ पे आ रहा हूँ, दैट मीन्स फॉर श्योर आई इज़ नॉट द लास्ट, तो मतलब उसका प्लस वन कर सकते हैं, एंड जे इज़ नॉट ज़ीरो मतलब उसका माइनस वन कर सकते हैं। लेट्स डू दिस, एंड आई थिंक दिस शुड वर्क। यप, लेट्स ट्राई। फक, अब चार किस आए, तीन तो डिजिट है। What the fuck? Should I go print row for row and do? Let's see. इसका माँ का भूल for row and
range and print row is equal to row, and then print your dp of row, then print your रो भी नहीं बोलूँगा, स्टार्ट बोलूँगा, and print your dp of row, then print, अच्छा ये तो हो गया था, print खाली इसमें, एंड इसको उल्टा चलाते हैं, हो गया, लेट्स सी, स्टार्ट 2 से है, ए एट ए स्टार्ट इज 2, तो तुम्हारा जे जब 0 है तो वो एक लेंथ की वजह से करेक्ट ना, स्टार्ट तुम्हारा 1 हो तो ओके ये गलत है, दिस इज क्लियर रॉन्ग, ये 1 होना चाहिए, when I is 1 j is 1 both are e1, दोनों, मैंने देखा भाई सेम है, दो लेंथ का है ना, सेम है, यहाँ पे आया सेम, सेम एंड सेम, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, तो जब मेरा आई क्या है, तो मैं इसके ऊपर वाले से गया पूछा भाई, जब स्टार्ट था तो मेरा i+1 से, एंड था तेरा इससे, तो ये तो 0 देगा, लेकिन 2 तो प्लस आ गया ना, अगर if I and j are the same elements तो क्या होगा, सो टेक्निकली 1 आना चाहिए राइट, क्या ये मेरे को 0 देगा, आई थिंक सो, मेरे को 0 देगा, बिल्कुल देगा, सो i+1 ऐसा तो होगा नहीं, तो ये 0 ही देगा, सो मे बी आई हैव टू मेक another odd condition, और I is equal to j, राइट, नाउ यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो जब मैं इधर पे आऊँगा आई विल सी, देन मेरा j आगे बढ़ेगा राइट, आई विल सी स्टार्ट जो मेरा था, और अब जो मेरा नया एंड है वो सेम है, तो ये कर लो, लेट्स ट्राई इट, वे सबमिट करने को किसने बोला भाई, आई वाज ओनली ट्राइंग टू रन इट, माय बैड, लेट्स रन नाउ, लुक्स गुड अब, यस सर आई एम द फकिंग गोट, द फकिंग गोट, अब एक और बढ़ा देते हैं, मन तो नहीं कर रहा है यार करने का, छः 50, ऐसे ही 10 मिनट ऐड देंगे तो 10 मिनट में होगा, सो आई एम गोना टेक कॉल इट क्विट्स हियर,
I am going to call it quits here for sure. Permission. Okay. 1 2 3 4 4 and 3 7 स्ट्रीम पे मैंने 4 ही करे हैं, वैसे 7 कर लिए दिन के, एंड देन रात को और कर लूँगा थोड़ा. आई नो दिस वॉज वेरी शॉर्ट स्ट्रीम, बट मेरे पास टाइम ही कम था, सो मैंने तभी सोचा कर लेते हैं. सो आइडियली आई वुड वांट टू डू दिस एज वेल, एंड देन 1 2 3 4 5 ऑनेस्टली मैं ऑफ स्ट्रीम कर लूँगा रात को. सो